Hello friends of class 10th. Today we will be talking about the topic of electromagnetic induction. Okay, this is a new word for you, electromagnetic induction. Let us understand this term first. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, right? How can we produce? In what different ways we can produce electric current? The very simple way is by using a cell or a battery. What does a cell or a battery provides you? It provides you with two terminals. One is at a lower potential, which is called the negative terminal. The other will be at a higher potential, which will be called as the positive terminal. Right? So when these two terminals are connected, the current starts to flow. But there is one more method by which the current can flow, and that is by the phenomena of magnetism. Okay, how can we produce electric current by the phenomena of magnetism? Let us see in the very first experiments, जब ये experiment शुरू हुए थे, देखो mostly discoveries जो होती हैं they are done accidentally. So I am talking about one such accidental discovery that was done by Michael Faraday. What was there? See, there was a coil of copper wire and a galvanometer is attached to that coil of copper wire. What is a galvanometer? Galvanometer is a simple instrument that detects current. अभी आपको करंट को मेजर करना हो तो क्या यूज करते हैं? एमीटर. लेकिन अगर करंट को सिर्फ डिटेक्ट करना हो कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, या फ्लो हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, राइट? सो फॉर दैट पर्पस galvanometer is used. And what is done? North pole, this is a magnet, okay, north pole of the magnet is brought towards this coil. Magnet के north pole को coil की तरफ लेके जाते हैं, and when we are doing this, the current starts to flow, right? The current starts to flow in this coil. इस तरह से इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है, राइट? लेकिन अगर इसी मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाया जाए, आई एम नाउ टेकिंग दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, देन अगेन द करंट विल फ्लो, बट दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंड क्लॉकवाइज. नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे, द डायरेक्शन वॉज एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ पोल को आप व्हेन यू टेक इट अवे, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी clockwise. Similarly, if south pole is brought closer to this circuit, ठीक है, अभी मैग्नेट को फ्लिप कर दिया and now the south pole is brought close to the magnet, and if this is done, the current flows in a certain direction, that is clockwise direction. But if the south pole is not brought closer, it is moved away. इसको पास रखिए और फिर इसको एकदम से दूर ले जाइए, then the direction of current in this loop will get reversed, right? Okay, now the thing is that why does this happen? सबसे पहली बात तो ये करेंगे that why the current flows when the magnet is moved. First thing, this all happens due to a force which is known as Lorentz force. What it is known as? Lorentz force. What is Lorentz force? See, in this circuit, everywhere we have electrons. These dots, what I am drawing, these are what? These are electrons, right? अभी आपने एक चीज पढ़ी थी that if there is an electron or a proton and if it is kept in a magnetic field, अगर इस प्रोटॉन या इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, एंड इफ दे आर मूविंग, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग, देन दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. किसी भी चार्ज को, किसी भी मूविंग चार्ज को, ध्यान से सुनना, किसी भी मूविंग चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, देन द चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स विच इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंस फोर्स. But here the charge is not moving. What is moving? Instead of charge which is moving, अगर मैं चार्ज को स्टेशनरी रखता हूं और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करता हूं तो भी उतना फोर्स लगेगा,
राइट या तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखो और चार्ज को मूव करो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या फिर चार्ज को कांस्टेंट रखो और मैग्नेटिक फील्ड को मूव करो तो भी ये फोर्स लगता है. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड the charge, the electrons, they are kept stationary, but magnet is moved. When the magnet is moved, its magnetic field will also move. So because of this, all these electrons will experience some force, and due to this force they will start to flow. And this phenomena is the phenomena of electromagnetic induction. How do we define the phenomena of electromagnetic induction? मैं 2 बार इसको बोलूंगा, ध्यान से सुने. It will be automatically get learned by the mind if you listen carefully. Right? See, the electromagnetic induction is whenever the magnetic field linked with a circuit is changed. Whenever the magnetic field linked with a circuit is changed, then current starts to flow in this circuit. This phenomena is called electromagnetic induction. फिर से बोलता हूं, whenever magnetic flux linked with a closed circuit is changed, then the current starts to flow in that circuit, and this phenomena is called the phenomena of electromagnetic induction. Right? Now, the current that is flowing in the closed circuit, जो current flow होता है closed circuit में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे induced करंट. क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट. अच्छा, करंट की बेसिक कॉज क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस. इसका मतलब इस सर्किट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस जरूर काम कर रहा है. उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या होगा? यू कैन कॉल इट इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस. What you can call it? Induced potential difference. Sometimes it is also called induced EMF. Induced EMF. Potential difference की जगह the term used sometimes is EMF, electromotive force. What is EMF? Electromotive force. अभी ये नाम क्यों है? पहली बात तो ये that it is electro, यानी फोर्स किस पे लग रहा है? इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है. M, that means motion. The force which is applied on electrons brings it in motion. Okay, very simple. EMF का मतलब क्या होता है? The force that is applied on electrons brings it into motion, right? But this is not happening by the use of a battery. This is happening by the use of changing magnetic field. So it is known as induced EMF, right? Induced का मतलब होता है without touching, यानी मैग्नेट को इससे टच नहीं करना है. You can move it close or away, but you are not supposed to touch it. Right. What is the use of this phenomena of electromagnetic induction? It is used to make this thing, generator. What is a generator? It produces AC और DC current, और चीज को जनरेटर बोलते हैं. So हमने क्या किया है? हमने जनरेटर बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया है. जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर विल सप्लाई अस विद इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्स एंड बैटरीज, बट एट दी लार्ज एक्सपेंस. यहां पे आपका कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, सिर्फ एक मैग्नेट है जिसको आपको मूव करते जाना है. जब तक आप ये मूव करते रहोगे, द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. राइट? I have known this fact that in some very backward countries of Africa, when they want to listen to the radio, then what they do, they fix a very small generator, a small dynamo in the radio. ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं? इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है ना. टिल दे कीप ऑन मूविंग दिस मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड, रेडियो चलता रहता है. एंड व्हेन दे वांट टू स्टॉप द रेडियो, दे स्टॉप मूविंग दैट मैग्नेट. मैग्नेट को बंद किया, करंट बंद हो गया, रेडियो बंद हो गया. Right? Watch this video over and over again till you understand the very basic concept of electromagnetic induction.